कभी गए हो रोड ट्रिप पर सिद्धार्थ और आदित्य के साथ? नहीं, we haven't done a road trip actually together. We've done some holidays together. It's a whole family. We've done one holiday, just the three of us also, but it wasn't a road trip. Karan, जब वो रिंग निकाल के ऐसे बाहर निकलता है, oh God, he's so sweet. But are you that caring and that sweet even in your personal life as well? हाँ, मैं तो ऐसा ही हूँ. I'm so caring. I remember Delhi was a very difficult shoot. It was a tough shoot because it was just physically tough, but it was enjoyable because of how difficult it was. ट्रिपलिंग का आपके हिसाब से अगला सीजन, like season 4, कहाँ शूट होना चाहिए? So I was thinking Spain नहीं तो South Africa या I think South America will be good. ब्राजील में होना चाहिए. पहले ऊटी तक तो ले जाओ. ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं. हाय कुणाल, कैसे हो आप? बस बिल्कुल ठीक. ऑल वेल, थैंक यू. क्या चल रहा है अभी? क्योंकि मुझे पता है दूसरी चीज तो चल रही है, बट वैसे क्या चल रहा है? वैसे ट्रिपलिंग चल रहा है. वेल, नॉट रियली. 21st से चलने वाला है, बट been busy shooting and now busy asking people to watch tripling, which I think is going to be a fab season. You all are going to really enjoy it. So okay, so ट्रेलर तो हम लोगों ने देख ही लिया है, और ट्रेलर कहीं ना कहीं हार्ट वार्मिंग भी लग रहा है, क्योंकि इस बार थोड़ा पेरेंट्स का एंगल दिखाया गया है कि उनकी सेपरेशन का, और कहीं ना कहीं फन भी लग रहा है. स्पेशली आपके डायलॉग्स तो जब आते हैं तो आपके चेहरे पर हंसी आ ही जाती है, ये होता है. तो वो चीज कहीं ना कहीं हमें दिख रही है. आप बताओ कि जब आप सीजन 3 का शूट करने वाले थे तो कितनी एक्साइटमेंट थी, बिकॉज इस शो में आप शुरुआत से ही रहे हो, और कितना खास रही है आपके लिए इस शो की स्पेसिफिकली जर्नी? आई थिंक फॉर मी ट्रिपलिंग वो मेरे लिए तो in the OTT space was the start of my journey on the OTT space, because that was back in 2015 में हमने पहली सीजन शूट की थी. तो आई थिंक और इन सभी लोगों के साथ मेरे बहुत ही करीब रिलेशनशिप्स हैं, विद मानवी, विद सुमीत, विद अमोल, विद शहनाज, विद कुमुद. So I think that we really हम एक फैमिली की तरह ही शूट कर रहे थे. It was a warm. So ये जो warm fuzzy feeling की आप बात कर रहे हैं, वो सेट पे हमेशा that was the attitude, that was the feeling, because everyone eats together, we chat, we shoot, we spend time together, and in this season हम एक ट्रैक पे जा रहे हैं. तो ऐसा नहीं था कि कोई कार चेस है या कोई गाड़ी में जा रहे हैं. Here the trip is a trek. तो इट लिटरली ऐसा लग रहा था कि हम एक फैमिली की तरह हम एक ट्रैक पे जा रहे थे. सो इट वाज रियली लवली, बिकॉज वी वर गोइंग ऑन दीज लवली लॉन्ग वॉक्स थ्रू दीज फॉरेस्टेड एरियाज, और बहुत मजा आ रहा था. एंड देयर इज लवली पीपल टू बी अराउंड. तो आई थिंक कि मेरे लिए it was just great to be around just people who you love working with, and who are also very talented. तो ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं मैं लाइन goof up ना करूं, नहीं तो मार लगी वाली, because all these guys are so good, and they're so talented that you just feel you need to be on your toes also. You can't just goof up and just like कि अरे इसमें relax यार, like we'll do it या हो जाएगा, because they're all bringing something fresh and new to the table. तो उसमें बहुत मजा है. तो it was a great feeling to be back on the tripling set. ओके, सो रियल फैमिली के साथ तो आप यहाँ पर जा ही रहे हो ट्रैक पर, कभी रियल फैमिली के साथ भी ट्रैकिंग पर कहीं गए हो? हाँ, we have done some. We've done a little camping किए हमने. I have been with my family, as in with my wife and kids. We've gone on a road trip. We went on a road trip to Pench, the national park. तो रुक के हम गए थे. 3 दिन आराम से 2-3 जगहों में रुक के हम गए, तो बहुत मजा आया. Then we have been on a long walking trek. भूटान गए थे a few years ago, और वहां पे we went on a long trek walking up to that एक point है जहाँ पे एक monastery है काफी ऊंची, Tiger's Nest Monastery करके. बहुत ही सुंदर है. I would recommend anyone to do that, but it's a long trek. तो चल के जाना पड़ता है. 3 घंटे का ट्रैक है, 3-4 घंटे का. And my mother, who this thing, she also went on the trek, and so it was that. तो वो वाली फीलिंग आ रही थी इसी ट्रैक पे, ट्रिपलिंग की ट्रैक पे, कि going with like a second family, a third family. तो
ऐसे ही मजे आ रहे थे। ओके नहीं, जैसे मैं भी एक ट्रैवल एंथुसियास्ट हूँ एंड मेरे को भी अच्छा लगता है जब कोई भी किसी तरह की रिकमेंडेशन देता है कि यहाँ जाओ वहां जाओ ऐसा, और मैं खुद हम्म रिकमेंडेशन देती हूँ लोगों को। तो अभी जैसे आपने बोला तो मेरी लिस्ट में वो कहीं ना कहीं चला गया, आपने बोला दैट यू बिल्कुल वुड जाना लाइक टू चाहिए, रिकमेंड इट। 100% यू शुड गो, इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। या अच्छा एक बात बताओ, अब तो फिलहाल फैमिली हो गई है और उनके साथ जाते हो, एक दौर होगा जब दोस्तों के साथ जाया करते थे, तो उसमें एक अलग ही फन एलिमेंट होता था, अब करेक्ट रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। तो करेक्ट। वो चीज को कहीं ना कहीं मिस करते हो आप? हाँ वो मिस करते हैं, क्योंकि एक जमाना था जब हम विदाउट एनी केयर्स इन द वर्ल्ड हम कहीं पे जाते थे हाँ गाड़ी लेकर, और हम लोनावला के आसपास कहीं पे गाड़ी नीचे उतार कर हम रात भर वहीं पे गुजारते थे, फिर लेक में स्विम करके वापस आते हाँ थे। तो इट वाज लाइक एंड लाइक पीपल आर डूइंग क्रेजी स्टूपिड थिंग्स, या there was a certain madness in your youth where you feel कि क्या पागलपन था, but we used to do it and used to enjoy it, हाँ राइट but I think I don't think I'll be able to do it now, and I think right now I don't think I'll enjoy it also. अभी या बस मुझे एक comfortable bed चाहिए and I just want to sleep nicely, and I दोस्तों के साथ 2-3 घंटे गुजार के बस बहुत हो गया, फिर मुझे एसी चला के सो जाओ भाई, बहुत हो गया ये सब भाग दौड़। आई थिंक नहीं, ऐसा ही आपने एक और फिल्म भी की थी, ये जवानी है दीवानी, उसके बाद से तो मुझे लगता है हर दूसरा बंदा मनाली जाने लग गया था दोस्तों को लेकर कि चल Yeah, चल my मनाली चलते God, हैं। yeah, that's true, that's true. तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज़ उसमें भी आपने ट्रैकिंग करी थी Well, उस फिल्म में भी। actually, उसमें I was not part of that part. या I mean, I'm अच्छा I'm only आपका आई थिंक हाँ आपका तरन वाला पार्ट, हाँ yeah, इट केम yeah, लेट, that's इट later. केम लेट इन द फीड। So I was not part of that trek. So नहीं that they did all the trekking. हाँ वो तो I हो was गया, on, हाँ वो सब हो गया, मैं तो बस नाचना गाना शादी और उसी रिंग में निकालने आया था रिंग निकाल। पानी में से। ये मैं सीन कभी नहीं भूलती, आई कैन नेवर फॉरगेट दिस सीन। तो मेरे लिए ऑफ कोर्स आपके बाकी कैरेक्टर्स जैसे नौटंकी साला में भी था, तो कई सारे कैरेक्टर्स जिससे आप आपको जानते हैं, बट मुझे लगता है कि ऑन टॉप ऑफ माय लिस्ट हमेशा वो होता है, वो तरन जब वो रिंग निकाल के ऐसे बाहर निकलता है एंड इट्स लाइक ओह गॉड ही इज सो स्वीट। बट आर यू दैट केयरिंग एंड दैट स्वीट इवन इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल, जैसे तरन का कैरेक्टर था उसमें? Well, I don't know. I mean, I'd like to think so. Every guy would like to think of himself as being very caring, and हाँ they think, "हाँ, मैं तो ऐसा ही हूँ. I'm so caring." या But I don't know. I mean, that's not for me to judge. That's for the या people who are loved by me to judge, not for हम्म me to say कि हाँ मैं तो बहुत caring. हाँ So I don't know. I don't know. But I mean I think I think I am quite caring and sensitive towards the people who I या love and जो मुझसे प्यार करते हैं. So yeah. ओके नहीं देखो, केयरिंग वाले एटीट्यूड के बारे में तो या नेचर के बारे में तो मैंने नहीं सुना ऑफ कोर्स अभी तक, लेकिन मैंने एक चीज जरूर आपके बारे में सुनी अभी रिसेंटली ही। तो मेरी अमोल और मानवी से बात हो रही थी जो आपके साथ ट्रिपलिंग Mm-hmm. में है, और मानवी वाज ऑल प्रेजेस फॉर यू, शी वाज लाइक कि ये तो कुछ भी बोलते हैं कुणाल एंड आपको बस हंसी आ जाती है। Mm-hmm. तो जबकि ऑफ कोर्स आपके डायलॉग्स भी ऐसी है जिससे हमें हंसी आए, बट वो कहती है अगर वो नहीं भी बोलते ना, वो कुछ भी नॉर्मल बात भी बोलेंगे ना, मुझे हंसी आ जाती थी सेट पर। तो बहुत Mm-hmm. डिफिकल्ट था सीरियस एक्सप्रेशन रखना, बहुत बार ऐसा होता था आपके साथ सेट पर? Yeah, no, it is tough, and also कि एक रैपो है ना लोगों के हाँ साथ, एक एक बॉन्ड है, कई सालों या से हम एक दूसरे को जानते हैं, whether Amol and Sumit and all of us. So I think या कि then you feel in that zone and you're feeling in that vibe where you're and then फिर हंसी मजाक में ही काम निकल जाता है, because it's also difficult. बहुत या ठंड है, या तो रात को शूट कर रहे हैं या 6 बजे सुबह उठना है, तो हाँ I think just to keep and everyone. I mean, I just like that lighter atmosphere. Otherwise, things get very like then it starts bogging you down. हाँ So I don't know. I mean, I think all of them are funny. बहुत ही funny है. कुमुद जी तो बहुत funny है. जी Sumit is very funny. Manvi is very funny. तो बहुत I mean, we were having a lot of fun. हम्म Uh, I think yeah, I think that because because we're so closely knit, I think that's the या reason why we were able to just joke so much with each other. Yeah. ओके। तो जैसे ट्रिपलिंग शो है, ये इट्स अबाउट सिबलिंग्स, तो Right. जैसे मैंने मानवी और अमोल को भी सेम चीज बोली कि ये शो ऐसा है जो मैं अपनी सिस्टर्स के साथ बैठ के देखती हूँ, आई हैव गॉट Hmm. 2 सिस्टर्स विद मी, Hmm. तो हम तीनों बहनें बैठ के साथ में देखते हैं, हम बहुत Hmm. रिलेट करते हैं बहुत सारे पॉइंट्स पर, जैसे कि वो Right. सुमित है या मैं चिंतन हूँ, जो भी है ऐसा करते हैं।
तो Right. आप भी पर्सनल लेवल पर आपको लगता है कि इस शो से कहीं ना कहीं रिलेट करते हो, बिकॉज यू ऑल्सो हैव सिबलिंग्स, Right. तो उनका कहीं ना कहीं वो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ चीजें मैच होती है सिद्धार्थ और आदित्य के साथ? Yeah, I mean, there are things that I think there are things with siblings. I think siblings generally, uh, you generally fall into the spoiled category, or the हाँ. responsible category, Yeah. or the category who's to, so we do sometimes assign that. It's not that we've been treated that way, but kabhi kabhi Yeah. wo assign ho jata hai ki अरे he's so spoiled, or he's very responsible, हाँ. so he's going to be the responsible one. So वो होता है. And I think that also with siblings, what happens is that you have certain memories of certain things, but everyone's perspective of that memory is different. True. You know, like Very so true. like you remember it some way, but someone else हाँ. remembers it some other way. But it was like this. No, it was not like this. It was like that. So I think Yeah. that everyone's perspective of the same memory is very different, which happens with all siblings. But yeah, I guess there are some similarities in the story as well. Some are more emotional, some are less Yeah. emotional. Some don't want to show it that much, but are actually quite emotional. Yeah. So yeah, वो सब चीजें हैं. I think that is also true in tripling. I think that they've brought out that not everyone deals with the problem in the same way. Like Yeah. one wants to take, and that's very much a part of the third season, is that कि एक ही problem से how three people try to solve it in different ways. Yeah. उनके like उनके character के हिसाब से, how Chandan would try to solve it, how Chanchal would try to solve it, how Chitwan would try to solve it. So I think each one is trying to solve it in a different way, and that's exactly how it would happen with siblings. That Yeah. you don't know the right solution. I know how to deal with this situation. Arey, you're doing यही rubbish. होता है. Arey, we should go here. That is the place to go. This doctor or हाँ. that thing or that. So I'm हाँ. saying that is everyone comes with their own solutions to a problem, and I think Yeah. that's what's interesting over there. Yeah. बट आप भी जाया करते थे, कभी गए हो रोड ट्रिप पर सिद्धार्थ और आदित्य के साथ? बिकॉज जब उन्होंने मुझसे पूछा, जब मेरी मानवी से बात हुई, तो उन्होंने मुझसे खुद ही पूछ लिया कि आप लोग शो तो देखते, बट क्या आप तीनों रोड ट्रिप पर कभी गए? मैंने कहा कि हाँ, तुम शो देखने के बाद ही मैं ऋषिकेश गई थी उनके साथ. अच्छा. No, we haven't done a road trip actually हाँ. together. Yeah. We've done some holidays together, हाँ. the whole family. But we've done one holiday, just the three of us also, but it wasn't a road trip. अच्छा. But we हाँ. had one really fantastic holiday that the three of us had a few years ago. So, हाँ, एक दो बार की हैं. ओके. सो Yeah. मुझे एक बात बताओ, सीजन 3 आ रहा है, और जैसे फर्स्ट सीजन था उसमें फन ज्यादा था. अब थर्ड Right. सीजन का ट्रेलर देख के मैं कहीं ना कहीं लग रहा है, बिकॉज पेरेंट्स का एंगल आ गया है, तो यहाँ पे चीजें थोड़ी इमोशनल भी हो सकती है. तो आप हमें बताओ कि सीजन 3 में हमारे लिए ज्यादा इमोशनली हमारे लिए ज्यादा वो होगा, या फिर हमें फन ज्यादा लगने वाला है? I think it's a good blend. I think while the trip is it's not a wild ride trip, as I was saying, कि ऐसा हाँ. नहीं है कि कोई road trip, it's not a long road trip or something. The trip is more internal. The trip Yeah. is more, and the trek is more is not as much of a chase or anything like that. So, but I think that there is a lot of fun in there. I mean, Yeah. there's a lot of humor, there's a lot of craziness. There's a lot of, I mean, how they're going to respond and वो कैसे react करने वाले हैं with the news. All of this is going to be a lot of fun. And of course, the emotional angle. Without the emotional angle, tripling won't be tripling. Tripling will, yeah. So you need that's like touching, heartwarming Yeah. sort of feeling. But what's going to happen in the end with the parents, all of that is what's Yeah. very interesting and intriguing. ओके. 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 सो अभी क्योंकि हम फन की बात कर रहे हैं, तो एज एन एक्टर आपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, काफी सारी फिल्में करी हैं अभी तक अगर आप याद करते हो, अपनी एक बार जर्नी को पीछे देखते हो, तो सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट किस फिल्म के सेट पर हुई होगी आपके हिसाब से, जहाँ पे आपको लगता है बड़ी मस्ती करी थी यार, और वो याद रहेगा हमेशा? I think, I mean, on all the films there have been, I remember Delhi was a very difficult shoot. It was a tough shoot because it was just physically tough. Firstly, I was very large and fat, and it was a very difficult shoot, but it was enjoyable because of how difficult it was. Ye Jawani was fun, but also enjoyable.
and not very difficult, not a tough shoot, Yeah. but great bunch of people. So I don't know which was the most fun. I think tripling as a family and as a cast, the people who got along the best and who chilled and all that stuff. I think tripling would be up there with the kind of bonding that we had, Yeah. and the kind of warm fuzzy feeling was the most on the tripling set between हाँ. the actors. So I think that is right up there. ओके, तो शुरुआत जहां तक मुझे पता है कि शुरुआत आपने अपने करियर की एक्टिंग से की थी, बट देन यू मूव्ड ऑन टू डायरेक्शन एज वेल. सो Well, I did some acting, then I directed, then I acted again. So I've been going back and forth. Yeah. हाँ वही तो, लेकिन इनर कॉलिंग क्या है अभी भी, अगर आप इस चीज को लेके सोचते हो कि ज्यादा मजा किस में आता है, डायरेक्शन को ज्यादा एंजॉय करते हो जब करते हो, और या फिर एक्टिंग के अपने पर्क्स लगते हैं कहीं ना कहीं? नहीं, I love both of them. I think एक एक्टर के तौर पे यू फील कि इतने ही लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं तो इतने ही कैरेक्टर्स आप प्ले कर सकते हैं. I mean that is your that is your zone, because you can't step out of this kind of block in any case. So you feel ki people from different backgrounds and different places of the country and different different communities, different races. So I think that it's interesting that you can use people from different places and tell stories. So that's why direction is great, because you get to use people who've come from so many different places and build something. That's why direction is a lot of fun, and it frees you up even more, I think, than acting. But whereas I love both, I mean, they're both just creative art forms, and I enjoy both of them equally. ओके ग्रेट. सो ट्रिपलिंग का आपके हिसाब से अगला सीजन, लाइक सीजन 4 कहाँ शूट होना चाहिए? मैं बताऊं कि मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, पहले आप बताओ आपको क्या लगता है, बिकॉज शुरुआत हुई थी रोड ट्रिप से, अब यहाँ पर आप ट्रैकिंग पे चले गए, तो अब आपकी भी लिस्ट में कहीं ना कहीं होगा कि अब ट्रिप पे ही जाना है, तो कहीं और जाना चाहिए अगली बार. हाँ, कहीं और जाना चाहिए. तो आई वाज थिंकिंग स्पेन नहीं तो साउथ अफ्रीका, या maybe South America. I think South America will be good. Brazil में होना चाहिए. मैं बताती हूँ मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब मैंने मामी और मोल से भी बात करी तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि हमें लगता है ऑस्ट्रेलिया. अब हम इंटरनेशनली ही बोलेंगे ताकि अभी मेकर्स को आइडिया मिल जाए कि हमें अगली बार ऑस्ट्रेलिया जाना है, और यहाँ पर उन्हें दूसरा आइडिया मिल जाएगा कि स्पेन या ब्राजील भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. अरे यार, अरे if they take us to Ooty, it will be a big deal यार. पहले ऊटी तक तो ले जाओ, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं. उन्होंने बोला ही इस वजह से था कि हम ऊंचा सोचेंगे, तो ऐसा. हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अर्जेंटीना बोलो, ब्राजील बोलो. हाँ, ऐसा कुछ बोलो. हाँ, ये भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा आइडिया है. मैंने भी उनको ये बोला, मैंने कहा कि अगर ऐसा है कि आप ऐसे इंटरनेशनली शूट करते हो और इतना बड़ा जाके जगह देखते हो, तो हमारे लिए भी ऐसा भी वो एक ट्रीट हो जाएगी, हम बाहर चले गए टाइप. हाँ, बिल्कुल. वो चीज है. बट वी होप कि मेकर्स विल गेट द आइडिया, और नेक्स्ट शूट आपका ऊटी नहीं, आपका बाहर ही हो जहाँ आप लोग प्लान करना चाहते हो. बट थैंक यू सो मच कुणाल, इट वाज फन chatting with you. Thank you. I wish I had more time with you, but that's okay. But all the very best for Tripling season 3, and we are really looking forward to it. And I believe it's going to be fun, right? Thank you. Yeah. Thanks for having me. Thank you so much.